Hello everyone, welcome to Infinity. So I have ordered iQOO 9 Pro and I've got this big box as you can see here. So guys, without any further ado, फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है. On top, as you can see, there's a logo of BMW and it's written Motorsport Premium Partner. So opening up the box, on top we have the phone itself and ये दो वेरिएंट में आता है. एक 8 256 GB एंड 12 GB रैम एंड 256 GB इंटरनल. आई थिंक वी हैव सम पेपर वर्क हेयर. वी ऑल्सो हैव दिस स्मॉल कार्डबोर्ड जिसके ऊपर स्पोर्ट्स कार इम्प्रिंटेड है एंड iQOO एंड BMW का लोगो भी है. We have some quick start guide then. We are also getting a nice looking back cover and quality काफ़ी बढ़िया है. Then we have the type C to type C cable and we are also getting a type C to 3.5mm headphone jack adapter. And then we have the whopping 120 watt of fast charger in the box, and as you can see it's really big and hefty too. गाइस हमें 120 वॉट इम्प्रिंटेड देखने मिलता है दोनों टाइप सी पोर्ट के एंड में. दिस लुक्स माइंड ब्लोइंग. ये BMW के मोटर स्पोर्ट्स डिज़ाइन के साथ आता है एंड इसका बैक जो है वो मैट है एंड ईजिली फिंगरप्रिंट कैच नहीं करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द बटन प्लेसमेंट्स, ऑन टॉप वी हैव द सेकेंडरी माइक्रोफोन. On right side we have the power button and volume rocker. Power button blue accent में है, that's nice. And the bottom we have the speaker grill, type C port and your SIM tray. And left is completely clean. फ़ोन बहुत ही आई कैची है एंड रेसिंग स्ट्राइप डिज़ाइन के साथ आता है एंड इट ऑल्सो हैज़ दैट ब्यूटीफुल एंड ह्यूज कैमरा बम्प ऑन द बैक एंड इट ऑल्सो हैज़ दैट क्लासिक कार्बन फाइबर टेक्सचर. मूविंग टूवर्ड डिस्प्ले, द स्क्रीन इज़ कटिंग एज. ये सेकेंड जनरेशन LTPO पैनल के साथ आता है एंड इट्स अ 2K E5 AMOLED डिस्प्ले. डिस्प्ले काफ़ी शार्प है एंड इट हैज़ PPI ऑफ 517. इट्स अ 10-bit पैनल. इट हैज़ ऑल्सो फास्ट 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट है और 1000 हर्ट्स इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स रेट है. डिस्प्ले स्लाइटली कर्व्ड है. जिनको नहीं पता LTPO पैनल क्या होता है, LTPO में आपका स्क्रीन रिफ्रेश होता है 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में एंड द टाइम यू स्टॉप यूजिंग योर फोन द स्क्रीन रिफ्रेश विल कम डाउन टू 1 हर्ट्ज टू सेव योर बैटरी लाइफ. The phone has the peak brightness of 1500 nits and it can also get really dim. Well, talking about the performance of the phone, it has the top of the line Snapdragon 8 Gen 1 processor and it comes with fast LPDDR5 RAM and UFS 3.1 storage. जो 120 Hz का refresh rate है और 300 हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट है, दैट इज़ डेफिनेटली गिविंग जस्टिस टू द गेम. फ़ोन 4700 mAh बैटरी के साथ आता है एंड इट स्प्लिट्स इन 2 cells टू गेट दैट फास्ट चार्जिंग and it also has that fast whopping 120 watt of fast charger in the box. Phone also supports wireless charging. While talking about my favorite feature is that fast ultrasonic fingerprint sensor that this phone has. Just look at the setup. I have kept my finger and it's done. Yes, that's it. As you can see, fingerprint काफ़ी fast and accurate है and जो इसका fingerprint area है वो भी काफ़ी बड़ा है as compared to S21 Ultra. iQOO 9 Pro interface is based on Vivo's Fun Touch OS and the phone comes with Android 12 out of the box.
Talking about the optics, it comes with a triple camera setup. It has that 50 megapixel sensor with gimbal stabilization. It also has 50 megapixel ultra wide sensor with 150-degree field of view and a 16 megapixel sensor for a portrait shots. Front camera has 16 megapixel sensor. I'll show you some camera samples. So, top of the line chipset, great camera, 2K AMOLED display, 120 watt of fast charging, ultrasonic fingerprint sensor, and a lot more. Does this all enough to justify a price tag of 65k? I'll tell you that in my full review, so stay tuned for that and make sure to hit that subscribe button. So that's it from my side, guys. See you in the next one. Take care. Bye bye.